करता हूँ मेरे चैनल MKP ज्ञान पे। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू अपग्रेड आवर ओएस फ्रॉम विंडोज 10 टू विंडोज 11। ये मेरा ब्लॉगर पेज है, आपको वीडियो के लिंक दे दूंगा। जो बंदा वीडियो देख के अपग्रेड नहीं करना चाहते हो, पढ़ के करना चाहता है, वो ये ब्लॉगर पेज फॉलो कर सकता है। 3 स्टेप है हम लोग को अपना ओएस अपग्रेड करने के लिए। फर्स्ट, थ्रू विंडोज अपडेट सेटिंग। सेकेंड, थ्रू डाउनलोड ISO, क्रिएट बूटेबल मीडिया, देन इंस्टॉल ओएस। थर्ड वन, डाउनलोड Windows 11 installation assistance tool and follow the steps. First one is the recommended by Microsoft through Windows update setting. For first steps, we need to go Windows update. We will get an option for check your hardware compatibility. पर हम लोग को ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अपने को चेक फॉर अपडेट करने का है, और जो भी अपडेट्स है वो पहले करना पड़ेगा। पूरा अपडेट कंप्लीट होने के बाद वो ऑप्शन आ जाएगा चेक योर हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी। वो चेक करने के बाद शायद एक दिन, शायद 1 आवर या 2 आवर्स के बाद अपने को ये ऑप्शन आ जाएगा योर अपग्रेड विंडोज 11 इज रेडी, इट्स फ्री, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। यू कैन जस्ट क्लिक हियर, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इट विल टेक सम टाइम, देन इट विल अपग्रेड टू विंडोज 11। Second option, you can download the ISO and you can install it. Where you can download, just click on this link. It will redirect to Microsoft page. My internet is little bit slow, so it's buffering still. See, this is the option you can choose. This is the option you can choose Windows 11. Click download option. Once it's downloaded successfully, you can use a Refuse or you can use universal USB installer. I have Refuse, so you can download the Refuse exe file from Refuse website. I can mention this link in this video also. Just click on it. Choose your ISO from here. Connect your pen drive. Then it will enable the start button. Just click on start button. After 20 minutes or 30 minutes, your bootable media is ready. You can install it as you install Windows 10, Windows 7 or Windows 8. This is the easy method. Let's go for the third. You will use a tool. Its name is Windows 11 Installation Assistant Tool. We can easily download it from Microsoft website, and we can run it. It will download the exe. It will download all the updates it required, and it will upgrade our OS from Windows 10 to Windows 11. Let's this one download it. It is already downloaded for me. I have clicked on it. I have to accept it. Then it will download the files. Then it will installation the upgrade files. Once it complete, you need to restart it. That's it from my side. Thank you for watching my video. If you like, please subscribe.